20 जनवरी को जब आपके रिजल्ट्स आएंगे, एवरीवन विल वेक अप इन द मॉर्निंग एंड विल बी लाइक वाओ, गंदारा निसान इज मेकिंग सम सीरियस कैश, और फिर उसको आप प्लाउ बैक कर सकेंगे. तो आई मीन इट्स नथिंग रॉन्ग विद इट. मैं ये नहीं कह रहा कि इलीगल है या कुछ है. Junaid, unfortunately I've been brought up in the wrong way. I've been brought up by my parents to be very ethical and very fair and very honest about. I'm not a businessman that way. I believe in ethics and morality more than anything. I have never manipulated any of the things. All right. नहीं, अभी we're not. As I said again, मैं बिल्कुल किसी की intention पे नहीं. It's just the Almighty's blessing that एक company जो बीमार थी वो उठ के तंदुरुस्त हो गई है जी, और जो दूसरी थी वो बन गई है. और जिस तरह भी हो, it doesn't affect the thing. I just hope कि you will आप appreciate करेंगे कि the question just pops out. I understand the question, and I had to ask. No, it is. I think it is more appropriate that you do ask me this question, and I think it would be more appropriate that I give you the honest answer. The honest answer is I have not manipulated any of the things. Excellent. And the fact is, if I had to do something, it is to my disadvantage to pay 32 rupees. I would have, if I was a businessman, I would have brought the share price down so that I have to pay less. Nobody is paying Gandhara Nissan. I'll be paying from my own personal pocket the money to do that, which I'm just a shareholder. There are other shareholders. So in which one company where I'm 100% a shareholder is paying more money to a company. That's Biboji. To a company in which I'm just a major shareholder. Sir, fair enough. Fair enough. But ये कि Gandhara Nissan will probably look a lot better than a lot better on paper. On paper. Yes. Profitability wise, yes. But that's not my thing. It was something that we wanted to do to be in good corporate governance to clean up. इनकी जो अर्निंग है इस साल 2006 में ₹2.95 की अर्निंग पर शेयर थी, और 2005 में उससे बेहतर अर्निंग थी ₹6 की. नाउ हफीज इन्वेस्टर सर्विसेज विच इज एन इंडिपेंडेंट रिसर्च हाउस, उन्होंने इनकी जो एस्टिमेट की हुई है 2007 की, उसमें दे हैव अज्यूम, उनके मॉडल में अजम्पशन है कि जो आपके 5.2 मिलियन शेयर्स हैं वो इस तरह सेल ऑफ होंगे एट एन एवरेज रेट जो उन्होंने अज्यूम किया हुआ होगा. एंड गिवन दैट अगले साल की अर्निंग बेस्ड ऑन दिस वो एक्सपेक्ट करें कि ₹7.5 से भी ज्यादा जा सकती है, अबाउट 7.6 रुपीज बेस्ड ऑन दैट. इन्होंने ये बात की वजाहत की है कि अभी ही दिसंबर की क्लोजिंग से पहले जो 6 माह के नताइज आएंगे उसमें मोस्ट लाइकली यू विल प्रोबेबली सी, एक तो ये 160 ऑड मिलियन की अगर आज पे रेट देखें वो सेल ऑफ का प्रॉफिट आएगा ना, और अगर रिवर्सल अलाउ करता है ऑडिटर तो ₹5 करोड़ और हो जाएंगे. सो 22-23 करोड़ रुपए, 21 करोड़ रुपए, not bad. But I'm not looking at that, Junaid. I'm looking at my performance in the sales. I intend to, since commercial vehicles is the sale, the completely built up units मैंने जैसे आपसे गुजारिश की थी कि it's not a very lucrative business. It didn't go as well as you had planned. It went all right. We had over 1,000 units last year. इस साल नहीं, because it's not competitive. तो the market भी जरा dead हुई है थोड़ी सी. Commercial market में I hope to reach 2,000 figure. हम चलते हैं फरहान अजीज की तरफ. He's a research analyst with जहांगीर सिद्दीकी. अस्सलाम वालेकुम फरहान. फरहान, ऑटो सेक्टर के डायनामिक्स become very competitive. गंदारा निसान और निसान इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स हैं, खासतौर पे ट्रक्स, क्या आउटलुक है इनके लिए? एक्चुअली अगर हम लोगों ने प्रीवियस ट्रेंड देखा है तो पाकिस्तान में जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स की ट्रक्स की सेल्स है और जो हैवी कमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स है वो डिक्लाइन पर है. और मेरा जो मिस्टर घटक से क्वेश्चन है दैट इज कि व्हाट इज देयर कैपेसिटी फॉर द प्राइम मूवर्स, and the second question is what is their capacity for LCVs and 4x4s, and what is their plant capacity for passenger cars. Another question is in their annual report they have said that they're going to launch CKD business by the end of FY 2007, और अगर ये लॉन्च कर रहे हैं तो ये कौन कौन सी प्रोडक्ट्स में स्टेप इन करेंगे? 07 का तो CKD का उन्होंने बताया कि 1300, 1600 एंड पोटेंशियली 2000 में डीजल, बट कैपेसिटीज वाला क्वेश्चन अगर आप वजाहत कर सकें. As far as the cars are concerned, we can make 6,000 units per shift into a 3 shift. With a little modification, we can increase that to 8,000. 8,000 a year. 8,000 per shift. Per shift. Which means 24,000 a year. A year. Comfortably.
With a little bit of expansion, we can double this. And trucks? Trucks ka, again, it's 6,000 vehicles per year. And given if you make one? We're given if we make one. Anyone. So total 24,000 a year capacity hai, and you can break that up into cars or trucks. Today we are making in the region of 15 units a day. 15 units a day. And अगर SUVs बनाए तो उसमें भी roughly same? Same. SUVs and cars, there's no difference. Because we have the capacity to think. It's just a question of changing the model. Farhan, 24,000 or with a little bit of modification and investment, I guess 21-22 crore रुपए तो आ रहे हैं, so there can be more investment there. Right. They can increase that as well. And the question is, currently they are producing Chevys and Land Rovers under a contract with their respective. Actually, Farhan, if we could just keep you on the line, we have to take a quick commercial break. आपसे गुजारिश है आप हमारे साथ लाइन पर है. फरहान के सवाल को यहीं से कंटिन्यू करेंगे. We'll take a quick break. Stay with Power Lunch. Welcome back. Farhan Aziz from JS is on the line with us. Farhan, your second question. Well, the second question was they are currently producing Chevys and Land Rovers. They're agreement with some contract with their respective agents in Pakistan. मुझे पूछना है कि इनके कॉन्ट्रैक्ट जो हैं कितने टेन्योर के हैं? Answering that question, 8 साल का है जी. I think जिसमें से 2 या 3 साल गुजर चुके हैं. We still have a 5-year period ahead of us. Thank you very much, Farhan Aziz, research analyst with JS. Globally, Volvo or Nissan are now merging, and how will that impact Gandhara Nissan over here? क्या अब आप लोग Volvo की गाड़ियाँ यहाँ पर ला सकेंगे? Is that already on the cards? Junaid, Volvo has bought Nissan Motors shares in Gandhara, in Nissan Diesel. So it's become one of the leader shareholders in Nissan Diesel. Apparently, Nissan Diesel people say it will not affect the business in Pakistan, but ultimately it is inevitable. आपके जो principles हैं वो Nissan Diesel तो नहीं हैं? हमारे principal Nissan Diesel है. Your principal is Nissan Diesel. One of them, apart from Nissan Motor. आप इस वक्त टोटल उन दोनों की मिला के कितनी शेयर होल्डिंग है गंधारा निसान की? निसान मोटर्स की कोई शेयर होल्डिंग नहीं है. निसान डीजल की शेयर होल्डिंग है अबाउट 7%. 7%. It was 9%. And Volvo ने कितना खरीद लिया? Now, Volvo has bought about 40%. So about roughly 2.8%, indirectly 2.8% of your company is now held by default by Volvo. जी. So the possibility है कि वो इस market में penetrate करना चाहे? I think they will be penetrating into this market, but since we have a better platform, they would be utilizing us instead of us. I mean through you. जी. Volvo के trucks, for example, Volvo के trucks की बहुत बड़ी market है, especially in the heavier segment. Are you pursuing that? अभी आपने शुरू किया है, मतलब वो तो करें. आप अब तक गए हैं वहाँ पर? हम गए. We've gone to Japan. We've asked them this question. The standard answer is no effect, but ultimately we are seeing the things that the trickle-down effect will take place, and hopefully we would come to a favorable condition that would suit us, because we would draw the strength of Volvo as well as the market presence of Nissan Diesel to enhance. Not only this, even in Japan there are major upheavals in Hino also as well as in Isuzu. अब आई गेस जो पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर में हमेशा सुजुकी एंड टोयोटा दे बीन द क्लियर लीडर्स. कोई उनके करीब भी नहीं आ सक रहा. होंडा इन द सेमी लग्जरी लाइन आई वुड से, क्योंकि अब तो जब से इंपोर्ट्स खुली हैं लग्जरी लाइन की डेफिनेशन तब्दील हो गई है पाकिस्तान में. देन दे आर देयर. Nissan has always been a laggard in terms of its market share, in terms of its aggressiveness. अब जाके आप फाइनली जब एक ऑटो का मेन बूम चला गया है, now you're planning on doing assembly, CKD kits लाके assembly in Pakistan, when already analysts are saying कि जो एक
बड़ा बूम था जो पिछले 3 सालों में आया, अब इंटरेस्ट रेट्स भी ऊपर चले गए, वो स्लो डाउन हो गया है. व्हाई weren't you so aggressive all along?